बहुत सारी। मेरे पास नहीं है पैसे, मंगवा लो। तो दिख नहीं रहा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोलॉजी का लाइव। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ येट अनदर वेरी नाइस चैप्टर दैट इज फोटोसिंथेसिस। एंड इस चैप्टर में आपको भी पता है बहुत सारी साइकिल्स है, ये है वो है, तो हमें काफी सारी चीजें नहीं समझ में आती है। तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू गो थ्रू। तो जल्दी से पेन पेपर ले लीजिए, आपको जो भी याद रखना है, जो भी डाउट्स है वो सारे आप पूछ लेना मुझे आज। ओके और तो फोटोसिंथेसिस में एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, राइट। ये हमारी लास्ट लाइव की स्लाइड्स है। ऑलराइट, तो स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। पहले तो वी विल स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ दिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस, राइट। नाउ सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का मीनिंग जान लेते हैं। द वर्ड फोटो मीन्स light, right? Synthesis means formation. So formation in the presence of light is what my photosynthesis essentially means. लेकिन अब जब formation mention किया ही है तो formation of what can also be a very nice question. So that is formation of energy. ठीक है, तो essentially फोटोसिंथेसिस मेरा एक ऐसा प्रोसेस है जो सनलाइट से एनर्जी यूज करके खाना बनाता है अपना, और ये प्रोसेस कौन करेगा? मेरे प्लांट्स करेंगे। कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं। सो फोटोसिंथेसिस से होने वाले न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। मतलब खुद से खाना बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल में क्या आएगा? प्लांट्स, सम बैक्टीरियाज भी आ सकते हैं। ऑलराइट, सो जब हम फोटोसिंथेसिस की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट विद द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो C6CO2 plus 6H2O in the presence of say sunlight and chlorophyll
gives me C6H12O6 plus 6O2 is given out. तो ये जो है ये मेरा नॉर्मल इक्वेशन है, बट अगर हम इसको बैलेंस्ड इक्वेशन और थोड़ा हाई लेवल का इक्वेशन देखें तो यहाँ पे 12H2O एंड यहाँ पे प्लस 6H2O आएगा. दिस इज माय इक्वेशन. ठीक है, तो ये एक मेरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है फॉर फोटोसिंथेसिस एंड फ्रॉम हियर ओनली वी विल गो अहेड. तो मेरा ये जो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है इसको मुझे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है. सो कार्बन डाइऑक्साइड मुझे हमेशा शुगर्स बनाने में हेल्प करता है. सो दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय डार्क रिएक्शन. ठीक है, इसको डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट. ठीक है, वेर एज जो मेरा वाटर है इट हेल्प्स इन गिविंग मी ऑक्सीजन. सो दिस बिकम्स माय लाइट रिएक्शन एंड दिस इज ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन लाइट. कुछ ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि क्या डार्क रिएक्शन बिल्कुल भी डे टाइम में नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है. तो इसमें ऐसा होगा कि डार्क रिएक्शन डे टाइम में हो सकता है, लेकिन वहां पे एक चीज ऐसी होगी कि भाई उसमें वी विल नॉट हैव एनी इंटरवेंशन ऑफ लाइट. मतलब लाइट होगी तो भी उसका कोई लेना देना नहीं है. सो इट कैन हैपन इन द डे टाइम, यस, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द लाइट ऑफ माय light reaction or anything during the daytime for that matter. All right, so as I said, dark reaction can function anytime, day or night. But when it comes to light reaction, ये नाइट टाइम में ऑब्वियसली नहीं हो सकता बिकॉज इसको क्या चाहिए? इसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट है. सो लाइट रिएक्शन विल ऑपरेट ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम. ओके, सो दैट इज आवर इक्वेशन. जब ये क्लियर हो गया है, इफ यू वांट आप इस चीज को कॉपी कर सकते हो. सो यू कैन हैव दिस इन योर नोट्स एंड वंस दिस इज डन हम लोग जो लाइट रिएक्शन है उसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. ओके, सो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो हमारा है, यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शंस हमें देखने मिलेंगे एंड इन रिएक्शंस में फॉस्फोराइलेशन होगा. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट और एटीपी यू कैन से. ठीक है, सो लेट्स बाइफरकेट देम. नंबर वन यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन है ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब
using light, right? And the second one I have is cyclic photophosphorylation. Okay, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. सबसे पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखते हैं. यहाँ पे दो फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगी, P680 एंड वील हैव P700. वेयर एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में मेरे पास सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम है, P700, दैट इज फोटो सिस्टम 1. नाउ जब मेरा let's start with non-cyclic. इस केस में when I'm illuminating it with light, ठीक है, यहाँ पे इसको accompany water भी करेगा. So when light falls, okay, on my photo system or it falls on water, पहले तो फोटो सिस्टम पे लाइट गिरते ही इसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब इजेक्ट होने के बाद इसको एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेगा, फॉर एग्जांपल प्लास्टोक्विनोन. नाउ जब प्लास्टोक्विनोन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, दिस विल गो डाउन अ स्ट्रीम ऑफ रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, जैसे यहाँ पे साइटोक्रोम F, then you have plastocyanin, and then it will enter my photosystem 1, that is P700. जब ये काम हो रहा है तो यहाँ पे ये करते वक्त मेरे पास क्या बनेगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, राइट. आफ्टर दिस लेट्स कंटिन्यू. मेरे जो फोटो सिस्टम 1 है ये भी तो इल्यूमिनेटेड ही है लाइट से, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स तो आ रहे हैं, सो एनर्जी आ रही है. सो अगेन इसका जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल आल्सो बी इजेक्टेड एंड इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेगा. बट अब इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे? तो दिस इलेक्ट्रॉन इवेंचुअली विल गो and it will be accepted by NAD plus to form NADH2, or as it is written NADH plus H plus. अब इसमें हाइड्रोजन कहाँ से आया? वी कैन अज्यूम. तो मेरा जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे, इट अंडरगोस फोटोलाइसिस. व्हाट इज फोटोलाइसिस? लाइट जब वाटर पे गिरती है, it breaks into three parts. One is electrons to replenish the electrons in my photosystem 2. Second is oxygen that we breathe, and third is the hydrogen. Is this very clear? So this is how my non-cyclic photophosphorylation functions. Because ये ऐसा Z बनाता है, if you look at it from a different angle, तो इसको Z scheme reaction भी बोलते हैं. ठीक है, अगर इसके एंड प्रोडक्ट्स देखें तो इसके एंड प्रोडक्ट्स कौन से हैं? नंबर 1 इज ATP, नंबर 2 इज NADH2 एंड नंबर 3 इज ऑक्सीजन. तो ये तीन कौन से हैं? ये तीन हैं मेरे एंड प्रोडक्ट्स ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. Coming to cyclic photophosphorylation, when light falls on my photosystem 1, it is also illuminated and its electron is released, accepted by primary electron acceptor. This electron also goes down a series of electron acceptors, but eventually it will enter my photosystem, thereby not requiring any water. तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ये प्रोसेस के दौरान सिर्फ और सिर्फ ATP बनेगा. तो द एंड प्रोडक्ट of my cyclic photophosphorylation is only and only ATP, no oxygen, no NADH2, NADPH2 precisely. Is this very clear? ओके, सो ये जो है ये डिफरेंस है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में. नंबर 1 इज द टाइप ऑफ फोटो सिस्टम इट हैज. इस वाले में कितनी फोटो सिस्टम्स है? दोनों है 1 and 2. ये वाले में कितनी है? सिर्फ और सिर्फ एक फोटो सिस्टम है मेरे पास.
Please note this down. तो व्हेन वी स्टडी द लाइट रिएक्शन, हमें एक सवाल होता है कि भाई लाइट रिएक्शन का पॉइंट क्या है, व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज हैपनिंग. सो लेट्स फर्स्ट सी हाउ लाइट एंड डार्क रिएक्शन आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर म्यूचुअली. वो कैसे फंक्शन करते हैं. So this becomes my chloroplast. Okay, chloroplast में ये है thylakoids स्टैक करके फॉर्म कर रहे हैं ग्राना. ठीक है. सो नाउ मेरा जो ग्रैनम है और मेरे जो थाइलाकॉइड्स है, यहाँ पे क्या होगा, लाइट रिएक्शन. वेयर एज जो ये स्ट्रोमा है, यहाँ पे होगा डार्क रिएक्शन. राइट. सो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन कैसे होगा, वी नीड टू सी दिस. लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट्स कौन से हैं, मेरे पास है एटीपी एंड दूसरा कौन है, NADPH2. तीसरा इज ऑक्सीजन विच विल बी रिलीज आउट. नाउ हाउ आर दे हेल्पिंग इन माय डार्क रिएक्शन. मेरा डार्क रिएक्शन एक साइकिल है कॉल्ड C3 साइकिल. सो उसमें एटीपी और NADPH2 यूज होता है. ये क्या करेंगे, तो एटीपी मेरे डार्क रिएक्शन को प्रोवाइड करेगा एनर्जी, जिससे मुझे कौन मिलता है, जिससे इवेंचुअली मुझे मिलेगा ग्लूकोज. राइट. वेयर एज जो मेरा NADPH2 है, ये हाइड्रोजन डोनर का काम करेगा. इवेंचुअली ये साइकिल है देखो. सो दे हैव टू बी रिसाइकल्ड. सो इसके एंड में मुझे क्या मिलेगा, ADP प्लस IP एंड दूसरा क्या मिलेगा, NADP प्लस, जो एंटर होंगे मेरे लाइट रिएक्शन में. फिर से ATP और NADPH2 बनकर वो जाएंगे डार्क में, अगेन दे विल कम बैक. सो दिस इज हाउ दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो यू कैन से that the dark reaction is indirectly dependent on my light reaction for its products. Okay, so इनकी जो एंड प्लेस है कि कहां पर होते हैं, लाइट रिएक्शन कहां होगा, स्ट्रोमा सॉरी थाइलाकॉइड या ग्रैनम में, और डार्क रिएक्शन होगा स्ट्रोमा में. जस्ट चेक दिस आउट वंस. If this is done, we have one hypothesis to study now, which is known as chemiosmosis
hypothesis. Okay, this is called chemiosmosis hypothesis. We need to know what is going on over here. So pay attention. This is, पहले तो चीजों को नेम करना जरूरी है. This is my thylakoid membrane. अब हमने यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जैसा किया है, वैसा ही we are going to place over here in order to see that how functions happen. So यहाँ पे we will base our PS2 and we will base here PS. ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा, फिर जाएगा साइटोक्रोम, फिर प्लास्टोसायनिन एंड PS1. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, NADP प्लस से कन्वर्ट करेंगे NADPH2. ठीक है, ये जो बाहर की स्पेस है आउटर, दिस इज माय स्ट्रोमा. So what is this? This is the lumen of thylakoid. All right. Now what is going to happen? हम ट्रैक करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पास हो रहे थे, प्लास्टोक्विनोन जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं करता है, वो जो मेरे स्ट्रोमा में एक्सेस हाइड्रोजन आयन्स हैं उनको पंप कर रहा है अंदर. तो ना ही वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो हाइड्रोजन आयन्स को अंदर पंप कर रहा है. ये भी हाइड्रोजन आयन से ही ऐड हुआ है, बाहर के स्ट्रोमा के हाइड्रोजन आयन से. दूसरी चीज यहाँ पे जो हो रही है ये है कि वाटर ब्रेक होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा, बट इसका जो हाइड्रोजन आयन है वो अगेन कहाँ ऐड होगा, ल्यूमेन में. इस चीज के वजह से व्हाट इज द ल्यूमेन फेसिंग, एसिडिटी इंक्रीज, मतलब पीएच क्या हुआ है, लो हो गया है, तो ग्रेडियंट बन गया है. ना इस चीज को मुझे निकालना ही पड़ेगा. दिस थिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इट इज नॉट it is fidgeting with the concentration. So for this what will I do, I have this enzyme called F1F0. ठीक है, what will this do, it is making ATP from ADP and IP, but simultaneously what is it doing, it is pumping all my protons out back into the stroma. So this theory is known as chemiosmosis hypothesis.
This is a hypothesis because we think that this kind of something is going to happen. So that is why इसको नाम दिया है chemiosmosis hypothesis. This was given by Peter Michel, to remember the name. All right. So please have a look at this. Do ask me if you have any doubts. Now that we've seen chemiosmosis hypothesis also, we are officially done with all that happens in the light reaction. So we are now going towards dark reaction over here. डार्क रिएक्शन को हम दो डिफरेंट वेज में स्टडी करते हैं, दैट इज C3 एंड C4. तो C3 एंड C4 क्या है वो भी हम स्टडी करेंगे. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट वी हैव, ओके. बट फर्स्टली लेट्स सी द C3 साइकिल दैट वी हैव. इसको हम कह सकते हैं C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल, whatever name is suitable. नाउ ये साइकिल जो है, okay, this cycle doesn't have a lot to write, but we need to remember a lot of stuff. So first thing is, इस cycle में हमारा एक substrate है, just erase this first. सबसे पहले हमारा substrate है ribulose bisphosphate. Okay, ribulose bisphosphate है. ये कितना कार्बन का है? This is a 5 carbon substrate. ना इसके साथ हम क्या करेंगे, ये जब सबस्ट्रेट फॉर्म हुआ है, this happens at the end of the cycle. So who will be added from the outside? We have carbon dioxide and वो एक कार्बन है उसके अंदर. So 1 plus 5 is 6 carbons. So total हमारे पास एक 6 कार्बन का स्ट्रक्चर बनता है, बट वो बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर है. दैट इज व्हाई ये स्ट्रक्चर जो बनेगा वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, कॉल्ड 3PGA. ठीक है, तो ये कितना है 3 कार्बन, बट कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स. ओके, और इस चीज को, इस पूरे प्रोसेस को कौन एड कर रहा है? द एंजाइम टूबेस्को. आई एम श्योर आपने बायोमोलिक्यूल्स में इसका नाम पढ़ा होगा, राइट. नाउ 3PGA के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम इस प्रोसेस को आगे ले जाएंगे, but eventually what we are going to have is triose phosphate. Alright, but ये triose phosphate क्यों ऐड हुआ ये आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे हम क्या करेंगे, NADPH2 को यूटिलाइज करेंगे और कन्वर्ट करेंगे NADP प्लस में. क्यों? बिकॉज दिस इज माय हाइड्रोजन डोनर.
नाउ ट्रायोस फॉस्फेट जो मेरे पास है, ये इवेंचुअली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। ठीक है, बट इसमें से कुछ पार्ट ही यूटिलाइज होगा, इसमें से टू कार्बन वाले सॉरी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री थ्री कार्बन ईच जाएंगे। however these will continue ahead to regenerate my RUBP, that is ribulose bisphosphate. because it is regenerating, इस पूरे रिएक्शन को मैं कहूंगी रीजेनरेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रीजेनरेशन। हावेवर बिकॉज हम ये पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं, दिस इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। And then from here to here what we are doing is we are reducing, so this is known as reduction. Is this very clear? So this is my C3 cycle. Why is it called C3 cycle? Because its first stable product is how much? 3 carbon molecule. That is why this is known as my C3 cycle. Please have a look at this. ना C3 साइकिल में एक स्पेसिफिक चीज है जिसके बारे में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हमें जब ग्लूकोज बनाना है तो हमें 6 कार्बन की जरूरत है, राइट? बट व्हेन वी आर एडिंग ओवर हियर, वी आर जस्ट एडिंग 1 कार्बन। तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, लेट्स रिसाइट द रिएक्शन अगेन। इट इज 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus यहाँ पे 12H2O, 6O2 is given out plus 6H2O यहाँ पे है। So this beta is 6 carbon dioxide. So unless and until we use 6 carbon dioxide, we will not get glucose. तो ये जो साइकिल है, so यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं, it requires 6 turns of C3 cycle to form one molecule of glucose. Is this very clear? It requires 6 turns of my C3 cycle to form one molecule of glucose. इसमें कैलकुलेशन NADP प्लस का या फिर NADPH2 का या फिर ATP का, वो सारे कैलकुलेशन आ सकते हैं. So you should know how to calculate them. Clear है? So now let's move on to say C4 cycle. C3 साइकिल को हम C3 बोलते थे बिकॉज उसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वाज 3 कार्बन। तो C4 साइकिल को C4 क्यों बोलेंगे? बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन। ये साइकिल ऐसे प्लांट्स में होगी जहां पे हमें C4 साइकिल में क्रांस एनाटॉमी यूज होती है। सो क्रांस एनाटॉमी इज अ मस्ट फॉर दिस, राइट? ऑल्सो इसको और भी क्या कह सकते हैं? हैच स्लैक पाथवे, राइट? इट इज नोन एज हैच स्लैक पाथवे। इस साइकिल को दो पार्ट्स में करेंगे। नंबर 1
and this one is number. ओके, यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा दिखा देते हैं. So why is it done in two parts? Very important question. Let's first write what is what to understand. The top one, this cell is my mesophyll cell, whereas the bottom one is my bundle sheath cell. Okay, this one is my mesophyll cell, this one is my bundle sheath cell. Now what is going to happen? मेरे पास, ध्यान से सुनना इस चीज को, मेरे पास यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट एसिड. ये एक 3 कार्बन स्ट्रक्चर है. ये चीज मेरे पास ऑलरेडी कौन से सेल में है? मीसोफिल में है. और ये चीज जब आगे जा रही थी तो इसको किसने ज्वाइन किया? एटमॉस्फेयर से कौन एंटर हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है पीईपी के साथ with the help of a particular enzyme that is called peptidase. Okay, that is peptidase. That's the enzyme which is only and only present in my mesophyll cells. So peptidase. Okay, next, what is going to happen? Because carbon dioxide is added with it, that is 1 carbon plus 3 carbon, what is going to happen? Oxaloacetic acid, which is a 4 carbon structure, बनता है. Right? अब oxaloacetic acid बनने के बाद, this will convert into malic acid again, which is a 4 carbon molecule. After converting into malic acid will be transported from my mesophyll cell to my bundle sheath cell via what? It will be transported via plasmodesmata. Right? Now, because of plasmodesmata, we have malic acid over here as well, which is a 4 carbon structure. अब malic acid क्या करेगा? It will be broken down, ठीक है, into a 3 carbon acid and carbon dioxide. But what will happen to this carbon dioxide? Where will it enter? It will enter my C3 cycle. Why? Because my bundle sheath cell only has Rubisco. Okay, so what is the point over here? Rubisco is present only in bundle sheath cell in C4 plants. It is absent in mesophyll cell. Right? Is this very clear? Now, ये जो 3 carbon acid है, this will be sent back into my mesophyll cell, right? And it will continue with the process. So C4 cycle में what do we have to remember कि उसमें enzymes कौन से हैं? That is very important to remember. So have a look at this.
So if you have paid attention to this one, this was a very important point. C4 साइकिल में कौन से एंजाइम्स हैं, ये और दूसरी चीज कि वो कौन से प्लांट्स में होता है, मेज, जवार एंड ऑल, यू हैव टू रिमेंबर. So ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद है, then you can definitely ace this chapter. One more thing, last but not the least, let's see what is photorespiration. Now, photorespiration क्या है? Photo means light, whereas respiration, तो we all know कि इससे energy बनती है. But what is the relation between this? So, firstly, this entire thing is a wasteful process biologically. But why will this happen? There's a reason to it. Let's see. We have Rubisco. What is the meaning of this word? Let's decode it. Ribulose, bisphosphate, carboxylase, oxygenase. Okay, so what does this mean? ये जो enzyme है, when there is higher carbon dioxide in the atmosphere, it will function as carboxylase. वो carbon dioxide को add करेगा किसके साथ? With RUBP. तो इवेंचुअली मुझे 6 कार्बन स्ट्रक्चर मिल जाएगा. लेकिन when we have higher oxygen in my atmosphere, it will function as oxygenase, and instead of adding carbon dioxide, it will add oxygen to RUBP, which is not yielding me any more carbon. This still stays a 5 carbon structure. Now you tell me कि ये 5 कार्बन स्ट्रक्चर को मैं 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं ब्रेक कर पाऊंगी, बिकॉज हमारी C3 साइकिल चलती ही कैसे है? 2 पार्ट्स में 6 कार्बन अनस्टेबल स्ट्रक्चर के ब्रेक होके, राइट? सो दिस विल नॉट हैपन ओवर हियर. तो यहाँ से या पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे ये साइकिल चलेगी. So this thing is a lot of problematic when it comes to C3 plants, right? So इसलिए photorespiration is going to happen, and which is a wasteful process for me. Is this very clear? So you have to remember this, and if you have any doubts, then let me know, and all the very best.